Hello everyone, welcome to the M3 Academy. In today's session of the antimicrobial, here we discuss some common important antibiotic like aminoglycoside, macrolid, fluoroquinolone. Yes, and we already covered the session on the aminoglycosides. Yes, a few months ago we already conducted a session, and this one page is enough for the aminoglycoside. We will decode aminoglycoside into Z word of the aminoglycoside in this mnemonics form. Yes, so after this class you will able to do answer of the any question from the aminoglycoside. Yes, so please comment about the audio visual so we can proceed with the session. Yes, so as you see this aminoglycoside, and aminoglycoside started with the A. Yes, so A is the first letter in alphabet. A is the first letter in alphabet. So you can say A is the first letter in alphabet. So aminoglycoside inhibit first step of the protein synthesis. It inhibit first step of the protein synthesis, and it also inhibit it also freeze the initiation, interfere with the polysome formation and misreading of the mRNA code at 30s unit. Yes, so how we can remember aminoglycoside started from the A. A is the first letter, so it inhibit the first step of the protein synthesis. It has M for the misreading of the mRNA and work on the 30s subunit. Yes, you can see in this picture also. Now, so next thing is amino. So in the spelling of the aminoglycoside, the next is a amino min. Yes, amino min means minus. So it work on the minus means the negative. So gram negative gram negative bacteria except salmonella. So this question asked in NEET PG, the aminoglycoside amikacin is not effective for the salmonella. Amikacin is not effective for the salmonella, and this question asked previously in the NEET PG, you can note down. So this is NEET PG PYQ. Yes, so in aminoglycoside, min means minus means it work for the gram negative bacteria except salmonella. Now, so next is in means inactivating enzyme. So mechanism of resistance is inactivating enzyme. Yes, but amikacin, natrilimycin are not susceptible for those enzymes. So may be effective against organism resistant to aminoglycoside. Yes, so are not susceptible. A means amikacin and for nitrilimycin. So these two drugs not susceptible for the inactivating enzyme. So we can give in the case of aminoglycoside resistant. Now again in means intravitreal injection of the gentamicin. Accidental intravitreal injection of the gentamicin causes macular infarction and blindness. Causes macular infarction and blindness. Yes. Now next thing is the spelling of the aminoglycoside. We already decode A min, yes, and in. Now the next is a N. So yes, so what is the full form of the N? N for nephrotoxicity. Nephrotoxicity is reversible because the damage of the PCT is reversible. PCT cells can regenerate. So mostly seen after the 5 days. Yes, so prevented by the OD dosing and usually seen after the 5 days of the starting. Yes, and autotoxia also seen after the 5 days. Yes, so dose should be decreased in renal insufficiency and toxicity to the PCT. Most nephrotoxic drug, and for you can remember neomycin. Neomycin is most nephrotoxic drug, so we are not giving it as a systemic. Yes, so only topical use is there. Only topical use of the neomycin is there. Yes, next nephrotoxic drug is gentamicin, as you write G in the kidney. Yes, so when you draw the diagram of the kidney, you can easily draw the G in the kidney. So gentamicin, then the tobramycin. Yes, least nephrotoxic is streptomycin. So when you write the least, it has AST. ST means streptomycin. So streptomycin is least nephrotoxic aminoglycoside. Yes. So our next point is when we decode aminoglycoside. So we decode A, min, then in, then N. Yes. So next N is neurotoxicity or neuromuscular blocking effect. That's why we avoided in the myasthenia gravis. Yes. So also is avoided in the yes, neuromuscular blocking effect and avoided by the slow infusion or the IM route, and respiratory depression is reversed by the calcium, so contraindicated in the myasthenia gravis.
maximum neurotoxicity, N maximum neurotoxicity. So N for neurotoxicity, N for neomycin. So not used systemically, and then the streptomycin. Again, in the full form of the aminoglycoside, N4 you can remember narrow margin of the safety, N4 you can remember narrow margin of the safety, and neomycin, famotidine, topical use only because this is highly nephrotoxic drug. Neomycin orally used for the gut sterilization in hepatic encephalopathy. Yes, in the hepatic encephalopathy for the gut sterilization we can use the neomycin topically, but the drug of choice is rifaximin, and also we are using the lactulose. Yes. Now, so in the aminoglycosides, next letter is the O. O for you can remember ototoxicity, and ototoxicity is irreversible. So you can say out of the reversibility. How you can remember ototoxicity? O for out of reversibility. So this is irreversible, and it affect the outer hair cell, and this question also asked in ini-cet. This ototoxicity affect O4, you can mark the option outer hair cell direct damage. Yes. So this is two type, cochleotoxic and vestibulotoxic. Cochleo means can. Can means kanamycin, amikacin and neomycin. Yes. So maximum auditory toxicity you can say A for maximum auditory, A for amikacin. Yes. Now next point is vestibulotoxic. So vestibulotoxic, you can remember mnemonic vestigial. Vestigial is a SG, SG as for streptomycin, G for gentamicin. So streptomycin has maximum vestibulotoxic because the vestibulotoxic spelling is come earlier. So streptomycin is maximum in the vestibulotoxicity. Now next is tobramycin. So tobra means two. Tobra means two. Two means it has both type of the toxicity, cochlear and vestibulotoxic, and least ototoxic is natillemycin. So how we can remember when you see this natillemycin is the L, so L for least toxic. So least toxic is natillemycin. Yes. So so we are proceeding with the aminoglycoside, and next alphabet in aminoglycoside is O. O means you can say O2 dependent uptake in bacterial cell. So auto-dependent uptake in bacterial cell means inactive against anaerobes, also inactive against salmonella. Yes, it effective for the gram-negative, but ineffective for the salmonella. Now, O for OD dose because exhibit concentration dependent killing and prolonged antibiotic effect. Yes, this is post antibiotic effect, and we already conducted session on the CDK, TDK, and the PAE. You can revise from the premium topic group. Yes, so you can register via the link. Yes. Now, so next is a side. When you write the aminoglycoside, yes, so it end with the side. Side means sidal. So this is sidal drug. Yes, so rest of the protein synthesis inhibiting drug are static, but only aminoglycoside which are inhibiting protein synthesis but sidal. Yes, because it's contain the name sidal. So this is the sidal drug. Yes, and aminoglycoside, side means you can remember synergistic with the gram-positive bacteria, and beta-lactam or vancomycin. So synergistic effect against gram-positive bacteria with beta-lactam with vancomycin. Why? Because beta-lactam also sidal, vancomycin also sidal. Yes. Now next is streptomycin is first line drug in TTP. So what is the full form of the TTP? TTP means tuberculosis, tularemia and plague. Tuberculosis, tularemia and plague. This is the first line. Yes. And spelling of the streptomycin itself, but resistant to streptomycin currently. So we are using the gentamicin for the tularemia. Yes, so this is the life cycle of the tularemia. Examiner can be asked via life cycle the drug. Now, so next thing is spectinomycin. Spectinomycin when you pronounce, so act on the 30S subunit. Single dose treatment for PPNG and penicillin allergic treatment resistant gonorrhea. Yes. Now, so let's stress on the no part of the aminoglycoside. No, no means NO. NO means negative organism. So it's work on the negative organism except salmonella. Yes. No means no protein synthesis, but it is sidal. Yes, not a static. No use in pregnancy. Yes. Next is a no oral use, not absorb orally because ionized and water soluble, and not metabolize in body, excreted unchanged in body, so no change in body. And we should not mix aminoglycoside in the same infusion or bottle with the other drug, and there is no absorption, no reaction in the GIT. And do not forget to
like, share, and subscribe this session. Yes, and also it does not cross the blood-brain barrier, CSF, and does not inhibit the anaerobes. Yes, so this is the decoding of the full form of the aminoglycoside. You can practice after this session and make your own flashcard. Yes, so another mnemonic is MNOPQRST. Yes, this is alphabetic mnemonic. So M means misreading of the codon, N means neuromuscular blockage it causes, and yes, it causes ototoxicity, O2 dependent uptake. Yes, purine channel needed work for. Yes, and work on the P site of the ribosome. This is polar compound, so not absorbed only, present in ECF only. Yes, Q means quick antibacterial down because this is cidal drug, and it has renal toxicity, synergistic with beta lactam 30s राइबोसोम की यूनिट पे काम करती है और टेरोटोजेनिक इफेक्ट होता है. सो क्या अपन ने यहाँ पे पढ़ा MNO PQ RST. Yes. So now time for the active recall. What is the full form of the NO in the aminoglycoside? Yes, type in the chat box. What is the full form of the NO? Means negative organism. Yes. Now, so in this way we covered this aminoglycoside, and you can also revise from this one page also. Yes, yes. So our next topic is macrolid. Yes, macrolid means the example is erythromycin. Erythromycin started from the E for it excreted via bile. So just remember A, B, C, D, E. Yes, E for erythromycin, B for bile, E for excreted. So it excreted via bile. But the clarithromycin has a common route of the excretion means renal and biliary. So जो क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है वो दोनों रूट से जाती है. C4 कॉमन रूट renal और biliary दोनों से जाती है. अजिथ्रोमाइसिन आज तक काम कर रही है मीन्स लॉन्गेस्ट टी हाफ इसका होता है, इसलिए इसको ओडी डोज में देते हैं. यस, काफी ज्यादा टी हाफ इसका है. मैक्रोलिड में सबसे ज्यादा टी हाफ अजिथ्रोमाइसिन का ही होता है. Or how we can remember the uses? Yes, so you can assume the story of the obese person. Yes, this obese person, macrolid. Macro means big. Big means obese. So you can imagine this obese person. So this obese person is eating corn because corn has a high glycemic index. This can cause obesity. So Cornybacterium diphtheria. You can see the coughing. This person is coughing. So whooping cough is there. Yes, and this is atypical. This person is atypical means atypical pneumonia. Yes, and this person is lazy. That's why it's gaining the weight. So lazy means Legionella. And this person living in camp. So Campylobacter. Yes, and this is crying to so chancroid. So chancroid. So these are the uses of the macrolid. Yes, you can just assume this photo of the obese person and easily assume the things. Yes. Now, so next drug is clarithromycin. We already discussed C4 clarithromycin, C4 common root, hepatic and renal both, and it used for the MAC, yes, and H. pylori infection. Yes, Mycobacterium avium complex. Next is anti-inflammatory. So when you write the inflammatory, M से आप लिख सकते हो macrolide. So macrolide also passes the property of anti-inflammatory action and is useful for the prevention of the cystic fibrosis exacerbation. तो जब एंटी इंफ्लामेटरी लिखते हैं एम से ही अपन मैक्रोलिड बना सकते हैं. यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं एम के बाद आप मैक्रोलिड ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको ये चीज याद रह सकती है. यस. नेक्स्ट ड्रग इज स्पायरामाइसिन इज द पी, सो यू कैन से दिस यूज इन द प्रेगनेंसी. सो स्पायरामाइसिन इज द एस, सो एस फॉर यू कैन से सेफ. For P4, you can say pregnancy. So sparamycin is safe in pregnancy and used to manage toxoplasmosis. So toxoplasmosis में भी P आता है, उससे भी याद कर सकते हैं. Or you can assume the pregnant lady in the spiral taxi. Yes, next drug is fidamixin, fidoximine. Yes, fidoximycin. So fidoximycin ended with the N, so this is non-absorbable macrolide. एंड फिडा हैज एफ डी, अपोजिट करेंगे डी एफ. सो क्या बनेगा यहाँ पे डिफिकल, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल. सो फिडाक्सी, यस, फिडाक्सोमाइसिन यूज फॉर द क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल डायरिया. यस, वी आल्सो यूज मेट्रोनिडाजोल, and we also using one monoclonal antibody for this pseudomembranous enterocolitis. Yes, can you tell me in the chat box what is the name of that monoclonal antibody? Yes, we already conducted a session on monoclonal antibodies. Yes, now, so this is about the macrolide. Yes, so please wait.
Yes. So what is the adverse effect of the macrolide? Adverse effect you can remember by the macro word. Macrolide means macro. M4 it work on motilin receptor, so it increases GI. Motility means it causes the diarrhea. A for allergy and it causes the arrhythmia by QT prolongation because the enzyme inhibitor. Now C for cholestatic jaundice seen in pregnant woman. R for reversible ototoxicity. R for rash and E for eosinophilia. Yes. Now, so you can also remember this word mosquito. Mosquito MO for the macrolide and QTO means the QT prolongation. So this causes the QT prolongation, but azithromycin do not cause this adverse effect. Yes, IV erythromycin causes dose dependent reversible ototoxicity. So only IV, not the oral. Yes, so you can remember by this erythromycin. So when you write erythromycin E, yes, E4 you can say erythromycin. E4 you can say this effect on the ear. Yes, E4 erythromycin E4 ear when given IV. Yes, parental route से देता है तभी ये side effect दिखता है. So erythromycin less than 6 week of the age, when you are giving erythromycin in less than 6 week of the age, it causes the it increases the risk of congenital hypertrophic pyloric stenosis. Yes, CHPS. Yes. तो ABCD में C, H, P ये सब आसपास के हैं तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रह सकती है. Yes, so we covered aminoglycoside and macrolide. Our next topic is fluoroquinolone. Yes, so fluoroquinolone inhibit the DNA gyrase. Yes, अल्फाबेट में F के बाद क्या आता है? ये B C D E F G. Yes, so किसको इनहिबिट करेगा? डीएनए गायरेज को. तो ऐसे भी आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं. Yes, so oral bioavailability, maximum oral bioavailability for the levofloxacin. So we can remember levofloxacin, L and O, L for longest, O for oral bioavailability. Yes, minimum oral bioavailability for the norfloxacin. So we can remember this when norfloxacin, N for no, O for oral bioavailability. So minimum oral bioavailability, और you can remember min लिखते हो तो उसमें n से n मिला दो तो क्या बनेगा oral bioavailability. So maximum oral bioavailability किसकी है? Levofloxacin की. LO largest oral. Yes, minimum किसकी है? Norfloxacin. Minimum oral. Yes. So next special drug. Special means the sparfloxacin and pfloxacin has the both excretion, renal and the hepatic. Yes. Now you can remember the MTB mnemonic. MTB means moxifloxacin, travoxacin. किससे जाती है? biliary excretion या hepatic metabolism से. So dose adjustment in renal disorder is not required. Yes, so to MTB से याद रखेंगे mycobacterium tuberculosis जो भी होता है. मोक्सी ट्रावा किससे जाते हैं? बाइल से. यस, बिलियरी एक्सक्रीशन से. हिपेटिक से जाते हैं तो उसको रीनल की डिजीज में दे सकते हो. तो ऑल द अदर ड्रग कैसे जाएगी? वो किडनी से जाएगी. यस, सो किडनी वाली जितनी भी डिजीजेस होगी उसमें अपन डोज को एडजस्ट करेंगे. यस, सो नेक्स्ट इज स्पार फ्लोक्सासिन मोक्सी और ट्रावा फ्लोक्सासिन. दिस इज लॉन्ग टी हाफ, सो वी आर गिविंग ओडी. सो वी कैन रिमेंबर ट्रावो मींस टाइम, सो लॉन्ग टाइम. यस, स्पार मींस लॉन्गेस्ट स्पार्क. कहीं भी बिजली से स्पार्क होता है तो काफी लंबे टाइम तक चलता है. मैक मोक्सी नाम में ही मैक्स आ रहा है तो मैक्सिमम टी हाफ होगा. सो मैक्सिमम टी हाफ किसका है? स्पार मोक्सी एंड ट्रावा का. तो नाम से पता चल रहा है तो नाम से अपन बता सकते हैं. नेक्स्ट ड्रग इज सिप्रो. सिप्रो बोलने में क्या आता है? सिप्रो इज प्रोनाउंस लाइक द सिप्रो फॉर सुडोमोनास, वर्क अगेंस्ट द सुडोमोनास. सी फॉर सिप्रो, सी फॉर कार्टिलेज डैमेज, टेंडिनाइटिस. सी फॉर इट causes a CNS side effect means the seizure, so we are avoiding in the epilepsy. Yes. Next drug is the norfloxacin. Norfloxacin is the first generation, so it has a narrow spectrum, and for narrow spectrum and for not effective for systemic use. So we are only using for the UTI. Yes. So next drug, next you can say Cipro and the Getifloxacin. So Cipro, P means Pseudomonas and Oflox O for gonorrhea. So this both drugs, Cipro and Oflox, used for the Pseudomonas management and gonorrhea. So gonorrhea को कैसे याद किया? ओफ्लॉक्स में ओ लिखो, गोनोरिया में डबल ओ से ओफ्लॉक्स बन जाएगा, शूडो सिप्रो में पी से शूडोमोनास बन जाएगा. यस, ये थिंग क्लियर है यहाँ पे. आगे बढ़े. यस, प्लीज गिव मी क्विक नोट अबाउट दी ऑडियो विजुअल. यस, सो ऐसा लिख के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ सो सिप्रो एंड लीवो आर ओनली फ्लोरोक्विनोलोन दैट इफेक्टिव फॉर दी शूडोमोनास. यस, सो यू कैन रिमेंबर ओनली CL ड्रग. Only CL drug are effective for the Pseudomonas. Yes. So now next is sparfloxacin. Yes.
So next is sparfloxacin. Spar is a P. So this work more for the gram positive bacteria. Sparfloxacin में क्या आता है? P. P का मतलब ये ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा काम करेगी. नेक्स्ट मोक्सी एंड ट्रावाफ्लोक्सासिन. नाम से पता चल रहा है मोक्सी मीन्स मैक्सिमम स्पेक्ट्रम. सो यू कैन से वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम. ट्रावा मीन्स टाइम, काफी लंबा लंबा टी हाफ है तो काफी लंबा स्पेक्ट्रम भी होगा. Next is Treponema pallidum and nocardia have resistant to all fluoroquinolone. Fluoroquinolone means याद कर सकते हो फल. So अच्छे फल खाने वाले को सिफिलिस नहीं होता, और जो जिनके पास कार होती है, मतलब फल जो बेचते हैं उनके पास कार नहीं होती. तो दोनों चीजें से कार नहीं होती मतलब नोकार्डिया. तो ट्रिपोनोमा पैलिडम मतलब सिफिलिस एंड नोकार्डिया दोनों रेजिस्टेंट होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन से. यस. नेक्स्ट. सो साइड इफेक्ट को कैसे याद करेंगे? C4 सिप्रोफ्लोक्सासिन. C4 कार्टिलेज डैमेज. यू कैन रिमेंबर साइड बाय साइड. कार्टिलेज डैमेज, कार्टिलेज मींस टेंडन, so tendinitis, so we are avoiding in athletes, we are avoiding in children. C4 CNS toxicity means seizures, so we are avoiding in the epilepsy patient. Yes. And you can remember CNS and C same pronounced like the seizures. Yes, so seizures side effect हो सकता है. So NSAID के साथ यदि ciprofloxacin को देंगे तो seizures के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं. Yes. Next is sparfloxacin and lomifloxacin. So spar means spark, lomi means light. So spark and light means the photo. So phototoxicity. So phototoxicity किसका side effect होगा? Sparfloxacin and lomifloxacin. Yes. नेक्स्ट इज गेटिफ्लॉक्सासिन. गेटी जी मींस दिस ग्लाइसेमिक इफेक्ट. सो ये हाइपरग्लाइसीमिया भी कर सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी कर सकती है. यस. सो नाम से पता चल रहा है गेटिफ्लॉक्सासिन जी फॉर डिसग्लाइसेमिक इफेक्ट, सो मे कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. एंड स्पार इन गेटिफ्लॉक्सासिन यू कैन से वी गेट क्यूट लुक इन स्पार्क. वी गेट क्यूट लुक इन स्पार्क. क्यूट लुक मींस क्यूटी प्रोलोंगेशन. तो क्यूटी प्रोलोंगेशन कौन कर सकती है? स्पार एंड गेटिफ्लॉक्सासिन. यस. नेक्स्ट इज travafloxacin. Trava T4 toxic, so this is hepatotoxic. Yes. So you are traveling with the toxic love. यस. सो लीवर. यस, याद रख सकते हैं. इसके बाद है टेमाफ्लोक्सासिन. टेमा मीन्स इट कॉजेज द इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया. सो आपने आरबीसी को फोड़ा तो उसमें से आवाज आई टम टम टम. तो आरबीसी को फोड़ने से जो आवाज आई टम टम टम, सो उससे पता चला कि आरबीसी फूट गई है, हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया. सो टेमाफ्लोक्सासिन क्या करेगी? इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया. सो टम टम की आवाज किससे आती है? आरबीसी के फूटने से. यस. So next is a grape. Grape causes a cardiotoxicity. So you can make a heart. Yes, you can make a heart, and you can make so many grape inside the heart. Yes. So you can say this is the heart. This is the grape. So grapevloxacin causes cardiotoxicity. Yes, क्लीना फ्लोक्सासिन क्या करती है? फोटोटॉक्सिसिटी. क्लीना में क्या आता है? एल फॉर यू कैन रिमेम्बर लाइट. सो लाइट से क्या बनेगा? फोटोटॉक्सिसिटी. यस. तो सबको क्लियर है ये? यस. ऑडियो विजुअल क्लियर है? आगे बढ़े. यस. सो अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया. वी कवर्ड अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलिड एंड फ्लोरोक्विनोलोन. अब नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज सल्फोनामाइड. यस. सल्फोनामाइड. सो सल्फटॉक्सिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग. सल्फटॉक्सिन में क्या आता है? डो फॉर ड्यूरेशन. सो दिस इज वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. सल्फासाइटिन इज द एसटी फॉर द शॉर्टेस्ट एक्टिंग. सो सल्फासाइटिन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग. सो लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फाडॉक्सिन, डी फॉर ड्यूरेशन. शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फासाइटिन इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग. यस. minimum crystalluria caused by the water soluble drug like sulfhexazole. Yes. So देयर शुड बी नो क्रिस्टल इन सेल्फी. यस. यदि आप खुद की सेल्फी ले रहे हैं तो उसमें कोई क्रिस्टल नहीं आने चाहिए. मींस मिनिमम क्रिस्टल यूरिया इन द सल्फिक्साजोल. यस. सल्फासिटामाइड. सी आता है. सी का मतलब ओकुलर इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो. सल्फ डायाजीन यूज फॉर द नोकार्डिया. सल्फ डाया नोकार्डिया डायाडिया. यस. सल्फ डायाजीन नोकार्डिया डायाडिया में है तो याद रह जाएगा. एंड यूसी के लिए काम में लेते हैं सल्फासलाजीन एंड ओसलाजीन. मलेरिया के लिए काम में लेते हो सल्फोडोक्सम एंड पायरामिथामिन. वी ऑलरेडी कंडक्टेड द सेशन ऑन द मलेरिया. those added in our premium registered group, kindly go on the pharmacology section. There is a recorded session of the malaria. Yes, please attend that session. Now, toxoplasma and P0VC pneumonia prophylaxis in HIV, we are using sulfadiazine and pyrimethamine. Yes, so more about this sulfonamide pneumonic, you can see.
वी कैन कैटेगराइज द सल्फोनामाइड को कैसे कैटेगराइज करते हैं, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग एंड स्पेशल यूजेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यस, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्किन रश, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज स्किन रश। Then low solubility means crystal urea, urine precipitation, useful for UTI. So this is S. And then L for large spectrum means gram positive, negative. Also folic acid synthesis blocker होती है, yes, और एनालोगो पाबा, और ये एनीमिया भी करती है, इसको बोलते हैं G6PD डेफिशिएंसी, हिमोलाइटिक एनीमिया। एंड नॉन माइक्रोसोमल स्टाइल ट्रांसफेरेज से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यस। नाउ फेनेटोइन, टोल्बुटामाइड, वारफेरिन, इसको इनहिबिट कर सकते हैं इसके मेटाबॉलिज्म को। एंटर इन प्लेसेंटा एंड CSF, एपिगेस्ट्रिक पेन, यस। एंड यूजेज यू कैन रिमेंबर बाय द बर्न एम्प्टी मींस बर्न ड्रेसिंग ऑफ द UTI, UC, RA, nocardia, malaria and the toxoplasmosis. So we already see. Also, you can remember this mnemonic sulfa, low solubility, useful for UTI, large spectrum, folic acid synthesis blocker, antimetabolite, analog of the PABA. Yes. So this drug not effective in presence of the pus. Yes. Side effect you can remember by sulfa, Steven Johnson, skin rash, urticaria, urine precipitation, leukopenia, folic acid deficiency, and the aplastic anemia. Yes, so just sulfa drug can speak about the features and the side effect. Yes, so most common side effect is skin rash. Yes. So our next antibiotic is daptinomycin. Daptino D4 you can remember death. Death means cidal. So this is bactericidal drug. D4 depolarization of the bacterial cell. So this is the mechanism of action of this drug. What is the mechanism of action of this drug? Yes, mechanism of the action. Depolarization of the bacterial cell. Yes. How this causes depolarization? By the efflux of the potassium. So you can remember efflux को कैसे याद करोगे? Deflux. D4 daptomycin, D4 deflux कर दिया पोटेशियम का. Next is D4 दीदी. दीदी का नाम क्या है यहाँ पे? वर्षा एंड मनीषा. वर्षा means you can remember the, yes, Varsha, VRSA, Manisha, MRSA. Yes, D4 दर्द means muscular pain, myopathy is a side effect. And आगे देखेंगे pulmonary surfactant antagonize the daptomycin. So we are not preferred using in the pneumonia. Yes, तो pulmonary surfactant इसको antagonize करता है. So ये सब था यहाँ पे daptomycin के बारे में. Yes. So our next drug is mupiromycin. So this question asked मुपिरोमाइसिन के बारे में. नेजल कैरियर, स्टेफाइलोकोकल नेजल कैरियर के लिए, नेजल कैरीज के लिए क्या काम में लेते हैं? तो मुपिरोमाइसिन को क्या बोलते हैं? सुडोमोनिक एसिड. एंड दिस यूज फॉर दी, we can use for the MRSA and gram positive bacteria, and with the N for nasal caries. Yes, eliminating nasal caries of the Pseudomonas. ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है. Yes, this is NEET PG PYQ. PYQ. Yes. So in this way, we covered few antibiotic, and chloramphenicol we already covered in the session of the Ram Nam drug. Yes, you can revise that session also. Yes, chloramphenicol. Yes, so chloramphenicol work on the 50S subunit. Yes, this material is taken from the KDT. Yes, so chloramphenicol is assembled with the feature of the gold ram. Yes, so worked on the 50S ribosome because the gold ram. So भगवान राम बड़ी यूनिट पे काम करेंगे, 50S सब यूनिट पे काम करेंगे. Yes, this is nitrobenzene derivative. Yes, and this is static. Yes, so ये किसी के भी ग्रोथ को रोक सकते हैं जो भी सही काम नहीं कर रहा है. तो क्या होगा? बैक्टीरियोस्टैटिक. साइड इफेक्ट क्या हो गए? बुराई को खत्म करने में इनका रोल है. बुराई को खत्म करने में रोल है मीन्स बोन मेरो. बुराई मतलब बोन मेरो सप्रेशन. एंड सुपर इन्फेक्शन, ऑब्वियसली सुपर पावर है इनके पास, सुपर इन्फेक्शन. और घर में बेबी राम रहते हैं मीन्स ग्रे बेबी सिंड्रोम इनसे हो सकता है. और स्टेप्टोमाइसिन वेंजुली इनका सोर्स होता है. यस. सो हाईली क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंट साल्मोनेला टाइफी, वो आर फैक्टर से इनका रेजिस्टेंट डेवलप होता है. यस, सो इसमें दो जी आप पढ़ सकते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड ग्लूकोयूरोनिक एसिड. अब क्योंकि ये भगवान राम है तो इनको हर कई जगह यूज नहीं करते हैं. जहाँ सब चीजें फेल हो जाती है या काम नहीं आती है या ऑप्शन नहीं होते तभी इनको अपन परेशान करते हैं. मीन्स क्या है? The clinical usage of the chloramphenicol for systemic infection is now highly restricted due to fatal toxicity. Yes, toxicity क्या क्या हो सकती है? बोन मेरो सप्रेशन हो सकता है. सो नेवर यूज chloramphenicol for the minor infection. So कहने का मतलब है कि never recall go dram for the minor things. Yes, those undefined etiology
एंड इफ द अदर सेफर एंटीबायोटिक अवेलेबल वी विल यूज। यस, इसको काम में नहीं लेते हैं, दूसरी अवेलेबल तो उनको काम में लेते हैं। तो क्लोरामफेनिकोल एक बार यूज किया तो फिर बार बार यूज नहीं करेंगे क्योंकि काफी टॉक्सिक है। यस, डोज भी 2-3 ग्राम से ज्यादा नहीं लगाएंगे और 2 वीक से ज्यादा भी अपन इसको नहीं देंगे। तो यही याद रखना है कि राम भगवान को ज्यादा परेशान नहीं करना है, जब जरूरत हो तभी काम में ले रहे हो तो 2 ग्राम से ज्यादा मत दो, 12 वीक से 2 वीक से ज्यादा मत दो। यस, कोई दूसरे एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं हो तभी देना है, और जब माइनर इन्फेक्शन के लिए इसको नहीं देना। यस, साथ में रेगुलर ब्लड काउंट भी करना पड़ेगा। और कम कॉम्बिनेशन इंडिया में इसके काफी सारे कॉम्बिनेशन बैन है, फिर भी अपन कहाँ काम में ले सकते हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में, टेट्रासाइक्लिन, ब्रुसेलोसिस, रिकेट्सिया, ऐसी चीजों में, एंटेरिक फीवर में इनको काम में ले सकते हैं। यस, so this is all about the Chloramphenicol, and the session for the parasitology drugs and tuberculosis, hepatitis, antiretroviral already uploaded on the topic group. Please revise that. Yes, thanks for the participation. If you need a mnemonic session of any other topic, you can tell us in the comment section. Yes.